I hear a big round of applause from everyone just for gathering together this evening. Thank you so much. It's lovely.
नमस्कार सबको जो यहाँ पर आए हुए हैं आज। मुझे लगता है 2 साल बाद हम सारे इकट्ठे हुए हैं to bring back the energy and the vibrancy in our society, in our community. 2 साल में काफी कुछ बदल गया है. I think it took a toll on us and it put a number of challenges in front of us mentally as well as physically. But we have come out of it okay. I think we are all doing pretty fine. Do you all agree with me? Yeah? I want to hear a big yes. Very good. And I think the community over here at Edenwoods does have a big part to play in that. Do you think so? I still remember when it first happened. हम सब इकट्ठे हुए थे और हमने कहा था हम सबको हेल्प करेंगे. जहाँ कहीं भी अगर किसी के घर पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी तो भी हम इकट्ठे आएंगे and we will share responsibilities. Whether it is our security men who couldn't go back home, they had to be staying here only 24/7. Or any member of our building जिनके घर पे कुछ ज़रूरतें थी क्योंकि सबको लॉकडाउन में होना पड़ता था, घर के अंदर फंसे थे. But we all stepped up and we came forward and helped them out. So thank you to each one of you for stepping up and for playing, I think, one of the most beautiful responsibilities in a very gallantry fashion to ensure that we are here for every one of us. And that's how I think we've come together. And once again, coming together this year. The year is 2022. 2 साल तो बस ऐसे ही गुजर गए. But the fervor has not gone anywhere. We still have the same spirit. We're bringing it back together this year at EDWU 2022. And so the very first thing we're going to do is to start any beautiful occasion is with the lighting of the lamps. So can I have the Secretary of the Federation, Mr. Raghunatha, to please come on stage, and also a few members of the EWCA committee, Edenwoods Cultural Association. Can we have Bharti and Nilima also join Mr. Raghunatha, please? Bharti and Nilima happen to be members of the complex, but their achievements are something we will talk about a little later. They have broken glass ceilings, any kind of stereotypes we have when it comes to the female gender, and of course achieved quite a few things. I will talk about it a little later. Archana? I can see children, parents, and even some grandparents who are dressed beautifully today. They all look gorgeous, and they're all coming together for performances that is going to set the energy and the vibe of the place. It's going to take it to another level altogether. And I hope all of us will join hands in welcoming each and every one of them. काफी मेहनत की है सबने. मेहनत सिर्फ performances में ही नहीं, पर costumes, sound production, सब कुछ इकट्ठा करके एक साथ यहाँ पर perform करने के लिए, ताकि आज की शाम जो है वो एक ऐसी शाम बने जो हम सब याद रखें. Bringing back the energy as well as the unity of the complex through the annual performance that the EWCA, the Edenwoods Cultural Association, actually puts together. So all the members have come together and photos, selfies, Insta, yes, why not? Why not? Well, that's been beautiful, and now that we have set a foot in this favorite place of our complex, which is the grounds where we have the annual performance, the very first performance will be the Ganesh Vandana. It is choreographed by Shri Vaibhav Arekar and performed by Sumi Menon from Aspen.
In this performance, the dancer describes how Lord Ganesha takes his form. O Lord with the elephant face, he who is served by the celestial beings, he who eats the essence of the kite and jamun fruits. The performance is called Pilayar Padam, where the dancer describes how Lord Ganesha takes his form. O Lord with the elephant face, he who is served by the celestial beings, he who eats the essence of the kite and jamun fruits. O son of Mother Uma, destroyer of suffering, we bow down to your lotus feet, O destroyer of obstacles. Tum, tum, ta, ke. Tum, tum, ta, ke. Tum, tum, ta, ke. Ta, ki, te. Di, ki, te. Di, ki. Ta, ke. Dim, tam, tung, ga, ta, ka, dim, di, mi, ta, ding, ge, na, tum, ta, ding, ge, na, tum, ta, ding, ge, na, tum, 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 tak, tum, tum, tak, tum, tum, tak, ta, ki, ta, di, ki, ta, di, ki, ta, ka, dim, tam, tung, ga, tak, dim, dimi, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, 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 tak, tum, tum, tak, tum, tum, tak, ta, ki, ta, di, ki, ta, di, ki, ta, ka, dim, tam, tung, ga, tak, dim, dimi, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, 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 tak, tum, tum, tak, tum, tum, tak, ta, ki, ta, di, ki, ta, di, ki, tak, dim, tam, tung, ga, tak, dim, dimi, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, 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 tak, tum, tum, tak, tum, tum, tak, ta, ki, ta, di, ki, ta, di, ki, tak, dim, tam, tung, ga, tak, dim, dimi, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, 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 tak, tum, tum, tak, tum, tum, tak, ta, ki, ta, di, ki, ta, di, ki, tak, dim, tam, tung, ga, tak, dim, dimi, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, tad, ding, gin, na, tum, 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 tak, tum, tum, tak, tum, tum, tak, ta, ki, ta, di, ki, ta, di, ki, tak, dim, tam, tung, ga, tak, dim, dimi, tad, ding, gin, na, tum, 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 ta.
A wonderful round of applause for Sumi Menon. That was Ganesh Vandana. Thank you so much. That was beautiful. We're moving on to our next performance this evening. The EDWU Cultural Committee would like to make an attempt to summarize the rasas to you through a small act. Well, let's tell you a little bit about the theme of this evening, जहाँ पर सभी जो है members of this complex एक साथ आए हुए हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक भी. In fact, through the entire evening, I will be your chief host, but I have many other hosts contributing to the entire event. My name is Annie, and I'm from Regency B. Navarasas, the 9 emotions that are intrinsic to our day-to-day living. For all of us, moods or emotions don't need an explanation. From being on cloud 9 to being down in the dumps, we would have experienced the entire gamut of all these emotions in our lifetime. Even during the course of a day, our emotions fluctuate between bliss and grief and respect and disregard. Ancient Indian scriptures, especially Natya Shastra, have written and talked about these emotions as 9 emotions of Navarasa, the 9 moods that define the human personality. The scriptures go on to talk about how important it is to embrace these Navarasas. These 9 emotions are like the 9 spices that give life to the basic human personality and also make us conscious if any of these Navarasas is out of balance. These 9 emotions, the Navarasas, are Shringara, Hasya, Adbhuta, Shanta, Raudra, Veera, Karuna, Bhayanaka, Vibhatsa. The EDWU Cultural Committee would like to make an attempt to summarize these rasas to you through a little bit of an act. We will take small episodes from the life of Lord Krishna, whose life was embedded with every beautiful rasa. Shringara Rasa. You cannot say Krishna without the word Radha, and Radha without Krishna. Shringara Rasa can be seen and felt in so many of these stories. On one such day, Radha saw Krishna dancing and enjoying with the gopis. This made her angry with Krishna and she stomped off. Krishna was amused on seeing Radha angry. He tried in vain to please her, console her, appease her. But Radha was still fuming. Then Krishna pulled out his flute because he knew Radha loved it. And this will calm her down. As the melodious notes came out of the flute, Radha was besotted by it and forgot her anger towards Krishna and gazed at him with all the love in the world. This is Shringara Rasa. Playing Krishna is Archana, Radha Tapasya, and the gopis Bhairavi, Foram, and Deepa. We're moving on to the Hasya Rasa. Krishna was very mischievous and found great pleasure in troubling the gopis at Vrindavan. Sometimes he would follow them and spy on them. He would pull their hair or tug on their dresses to irritate them. He would follow them to the river and throw stones on their water-filled pots, soaking them with water. The drenched gopis would be enraged and scold him. But as soon as they saw his innocent gaze, they forgave him. All these pranks would invoke hasya and joy in the lives of everyone around him. The Hasya Rasa for you. From the Hasya Rasa,
We are now moving to the next rasa, the Karuna rasa. It was a stormy night. Dark clouds filled the sky. Heavy rains lashed in Vrindavan. There was thunder and lightning in the sky. And water began to gush into the fields and houses of the Brijvasis. They were on the verge of losing everything they owned and loved. They were grief-stricken, and so they panicked. They all rushed to Krishna and requested him to save them from this wrath of nature. It was then that Krishna rescued them by lifting the gigantic Govardhan mountain and gave them shelter and protected the Brijvasis. The grief and sadness of the Brijvasis and the compassion of Krishna is depicted in the Karuna rasa. Krishna here is played by Rajni, Gopis, Tapasya, Bhairavi and Kinjal, Gopas, Seema, Deepa, Akshata and Mayura. From the Karuna rasa, we are now moving to the Veera rasa. The story of Krishna's Kaliya Mardan is one of the most popular incidents of Krishna's childhood. Kaliya was a five-headed snake who made Yamuna river his abode. He poisoned the water of the Yamuna and everything surrounding it. Vapors and bubbles in the river killed even birds that flew over the region. Unable to bear this horror anymore, Krishna dived into the Yamuna. A battle began between Krishna and five-headed Kaliya. Kaliya attacked Krishna, but Krishna overpowered the powerful Kaliya. Kaliya surrendered, and they emerged from the river with Krishna dancing atop the head of Kaliya. This left the mark of Krishna's feet on the head of Kaliya. The brave story of Krishna that depicts the Veera rasa. Krishna here was played by Archana, Kaliya by Akshata, the Gopis, Seema, Mayura and Forum. We're moving on to the Raudra rasa. Raudra rasa, which renders through Krishna killing his evil uncle Kamsa. Krishna's evil uncle Kamsa had made several attempts to kill young Krishna. He was cruel and heartless, and people in his kingdom were mortified of him. One fine day, Kamsa invited Krishna to his kingdom, Mathura, as a trap. At Mathura, Krishna was challenged to many bouts of fighting with the elephants and the wrestlers. Krishna defeated all of them. This enraged Kamsa. He wanted to kill Krishna. Krishna could not tolerate Kamsa's atrocities anymore. He jumped over the high wall that protected Kamsa and stood before him face to face. Krishna ran up to Kamsa, held him by his hair, dragged him into the wrestling ring. He then took Kamsa's sword and with one slash, he beheaded Kamsa. Krishna displayed the Raudra rasa in this episode. Krishna played by Archana, Kamsa, Kinjal, the elephant Akshata and the Gopis, Bhairavi, Forum, Deepa and Mayura. We're moving on to the next rasa, the Bhayanak rasa. Aghasura was a dangerous demon sent by Kamsa to kill Krishna and his friends. Aghasura, with his mystic power, assumed the shape of a very huge serpent
and stretched his mouth wide open like a mountain cave. While playing, all the cowherd boys, cows and calves, entered the mouth of this demon serpent. All the children were frightened, scared, gripped with enormous fear to see this bhayanak sight. They panicked. At last, Krishna also entered into this cave-like mouth of the demon. Aghasura tried to smash Krishna and kill him. But Krishna expanded himself within the throat of the demon. He was suffocated and fell down dead. Then Krishna and all his friends came out of the mouth of Aghasura. The Gopas were stricken with a bhayanak rasa in the serpent's mouth. Krishna here played by Rajni, Aghasura by Bhairavi, Gopi, Seema, Deepa, Mayura and Forum. We're now moving on to the Bibhatsya rasa. One day, young Krishna, his brother Balrama, were playing and enjoying with their cows near the banks of the Yamuna river. Kamsa sent Bakasura, his evil friend, in the form of a huge crane with a sharp beak to kill Bakasura. Bakasura circled around them in the sky, then suddenly swooped down and he swallowed Krishna. But as soon as he did, he felt intense heat in his throat. Bakasura, who flew down to kill Krishna, he couldn't endure the pain anymore and vomited Krishna out. Krishna then killed him. The sight of Bakasura vomiting out Krishna was disgusting, and we can see the Bibhatsya rasa through this scene. Krishna played by Archana, Balrama by Seema and Bakasura by Mayura. We're moving on to the Adbhuta rasa. Once Krishna was playing with Balram and his friends. They saw that Krishna was eating mud. They rushed to report Krishna's mother, Yashoda, about this. The angry Yashoda immediately called Krishna and asked him about it. Krishna denied and told her that his friends were lying just so that she would scold him. But Yashoda was not convinced and asked him to open his mouth. Krishna then opened his mouth and Yashoda looked inside his mouth. She was shocked to see the oceans, the mountains, the sun, the moon, the planets. She saw the whole universe. She couldn't believe this extraordinary sight. She was shocked and astonished. It was then that she realized that her darling Krishna was not an ordinary child. Yashoda's dismay, shock, and surprise shows the Adbhuta rasa. Krishna played by Rajni, Yashoda by Seema, by Akshata, and Gopis Forum, Bhairavi, and Deepa. We're now moving on to the 9th of the Navarasas, and it's the Shanta rasa. Krishnam Vande Jagadguru. Shri Krishna is considered as Jagadguru. He is the teacher of all teachers. He invokes devotion. Shri Krishna is the incarnation of divine love. Shri Krishna's counseling to Arjuna regarding Karma Yoga gave us the Bhagavad Gita.
the Shanta Rasa, is shown by the devotees and yogis sitting in meditation with Krishna in their hearts. The deep meditative quietness of the bhaktas of Krishna depict the Shanta Rasa. The Navarasas. Krishna was Rajani and the entire team were the devotees of the EWCA. Can I hear a wonderful round of applause for the entire team? It was beautiful. Thank you so much. Well, this is just the beginning of the show. And we're moving on to, of course, many more events. And I think it's pretty much time now to start off the show, as we call it. Very first show, which we're about to begin, you can see the little tiny tots on stage, and I'm handing over the mic to Shonak to the introduction. ठीक ना ऑन करून दिला काहीच करू नको हा तुला मराठी Hello everyone, I am Shaunak Chinmay Vatare. Let's put our hands together for twirling dolls. Here comes our cute little Barbies who wants us to imagine them growing up with their beautiful twirls and Bollywood moves. So let's welcome our Barbies showcasing Adbhut Rasa, Shringar Rasa and Hasya Rasa, led by Kinjal Joshi and choreographed by Nidhi Chudasama. Dancers are Gyanvi Avsekar, Dhyanshi Balwal, Ivanya Dubey, Gyanvi Avsekar, Dhyanshi Balwal, Vishwa Pachange, Laurel, Ivanya Dubey, Regency B, Rochelle Lakra, Willow, Mrunmai Gosavi, Adyanshi Pandey, Sanvi Neeraj, Bhakti Birajdar Hekari. Ready. 5, 4, 3, 2, 1. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Come on, let's cheer our little ones on stage, everybody. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. सजना तेरे लिए सजना ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ संग तेरे है जीना मरना कसम मैंने खाई है सजना तेरे लिए सजना ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है क्या हाँ बात है। संग तेरे है जीना मरना
थकता हूँ, सेकंड ना लगे तू है वो जिसे देख देख जरा सा भी ना मैं थकता हूँ, नजर ना लगे। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट साल पे ठुमके लगाए सालिमा। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो चले, दुनिया जलती है तो चले, रात भर जालिमा के संग नचे बालमा। Woo! Let's hear it for the little ones. Hello. That was such a sweet performance. And once again, before we start the next performance, I have Shaunak from my team who will be introducing the next performance. Let's welcome our little gopis, our little radhas, showcasing Shringar Rasa, who are immersed in love and worship of Krishna and are complaining to Ma Yashoda about the naughty antics of Krishna. So let's welcome our dancing dolls, choreographed and led by Gauri Kasture. Dancers are Ruhi Kasture, Sanvi Chauhan, Aradhya Devarkar, Willow, Inika Palat, Aspen, Anaya Dubey, Kiara Shetty, Laurel, Ishani Pathak, Linden, and Aswi Jha Bay. Let's hear it for the dancing dolls. Also, a quick, kind request to those who are recording videos. आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज बैठ के रिकॉर्ड करें क्योंकि पीछे जो बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है. So please, please, please pay heed to this request that you please be seated while you're recording videos or clicking photographs for that matter. Thank you so much. मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, It'll be lovely if we keep cheering our little मैया ones on stage. यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से
Can we have a big round of applause for Dancing Dolls? Calling for Shambhavi. Can I have Shambhavi at the stage area, please? Can I have Shambhavi at the stage area, please, immediately? It's lovely to see almost everyone in the complex that have gathered, where everybody of all ages have got together and are performing for you. Well, right now, we have on stage Mesmerizing Angels, beautiful in blue and white. Out of all the emotions, love is definitely a beautiful one. Our little angels here are shining with innocence and asking their favorite Chand to come down. And as Rudyard Kipling said, that God could not be everywhere, so he created mothers. The next song is about the love for their beloved mothers. In Mesmerizing Angels, we have Adya Jha from Pine, Sia Madan from Holly, Mrunali Ambadekar from Maple, Vibha More from Pine, Sarah Rahul from Cypress, there's Sanvi Kumar Kerur from Linden, Hartashika Sefi, I don't know if I'm saying that right, from Poplar, Sia Jaden from Linden. Mesmerizing Angels, the stage is all yours. चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ बैठेंगे बातें करेंगे चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते
सीखा, तूने मुझे संवारा, निखारा, इस काबिल बनाया। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। Oh, that's beautiful. And that is really, really beautiful. Can we hear it from everyone? A thunderous round of applause. And I'd now like to call upon Shambhavi from my team, who will be introducing the next act. Good evening, everybody. My name is Shambhavi Goyal, and can we all welcome शूरवीर बच्चे? As we know, शत्रु चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्रा से भी परास्त किया जा सकता है। जो उत्साह मन में उमड़ता है, वही वीर रस होता है। Veer Ras depicts courage and bravery, presenting an energetic performance by Veer Ras and depicting and evoking the sentiment of the bravery of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So please welcome Tirtha Pandey from Holi, Kiara Karna from Regency B, Tanishka Jahadav from Laurel, Mishka Dhote from Regency B, Evelyn Siju from Willow, Nishant Jahadav from Bay, Malvika Singh from Regency B, Ishan Bhatt from Regency B. Looking tough and fierce, Shurveer Bache.
सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माय भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा शिवाजी राजाचा भगव्याचा चमके सितारे देखो हमारे शत्रु तो सारे हारे जय हो हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो हे आज अंधेरे छटे हैं कम हुए हैं घटे हैं कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं गाती ये धरती है गाता ये अंबर है गाती है सारी हवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा हर दिशा में शिवा आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा गणपते भूपते प्रजापते स्वर्णरत्न श्रीपते प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा Reliving the energy of the Maratha Empire. That was amazing. Calling upon Baladitya to take over from my team to introduce the next performance on stage. Once again, a kind request to parents. I know you're very excited to see your children on stage. But please, आप जहां पर भी खड़े हैं, किसी और का जो view है, वो block ना करें. Please. प्लीज 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 बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है. प्लीज आप जहां कहीं भी हैं, पीछे किसी का व्यू ब्लॉक ना करें. आपको आपके अपने बच्चों को देखना भी है, एंजॉय भी करना है. खुद आप नहीं, बाकी सारे भी उन्हें चेयर कर रहे हैं, तो वो भी उसका भी बाकी सबको मौका जरूर दीजिएगा. The stage is yours, Baladitya. Thanks, Shambhavi, for comparing this performance. Good evening. I am Baladitya from Linden Building. Everyone knows that in Ramayana, Ram led an army of Vanas to fight against Ravana. Vanas had no personal gain from this,
but still they fought because it was the right thing to do. This proved their innocent, humble, and hyperactive nature. So let us call upon our Vanasena, composed with warriors like Rutva Sabkalir from Holar, Adi श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर जय बेटा सेल्फी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे छाती चीर फाड़ने से 2022 के हनुमान जी सेल्फी तो जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, है ना? बहुत खूब, बहुत खूब।
Over to Baladitya to introduce the next performance. Wonderful. Wonderful performance, you boys. Vanar Sena. अत्याचारी धर्म विमुख दूरजन का प्रहार हो जब महादेव माँ दुर्गा काली तांडव नृत्य करे तब in Navrasa, Raudra Ras or Krodha plays an integral part in depicting characters of Lord Shiva, Parshuram and Narasimha. Shiva is also known as Natraj, Lord of Dance. Honoring this theme, Divine Girls Group with Ishana Dubey from Regency B, Ashwina Ghosh from Regency B, Swara Pachange from Laurel, Arohi Singh from Oak, Shravani Jadhav from Bay, Shubhra Mule from Laurel, Aradhya Dhavbhat from Birch, with the group choreographer being Anil Singh and the group leader being Deepa Dubey, have presented Ananda Tandav and Raudra Tandav. May they set fire to the stage. Let's give it up for Divine Girls, everyone. Also, a quick announcement. All the participants entering will be entering from your right. When you're facing the stage, आपके right side से आप enter करेंगे और exit left से होगा. Thank you. भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्त के प्रेम से जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो क्रोध की मुद्रा में होते हैं तो उनके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती। इसी शक्ति से वो पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में भगवान शिव के कई अवतारों के बारे में बताया गया है, लेकिन उनके सबसे शक्तिशाली और विनाशक अवतार हैं वीरभद्र अवतार। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगलिंगमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगठगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो
indeed was a fiery performance. Let's give it up once again for the girls on stage. Amazing. Over to Shambhavi. Over to Komal from my team. A big hello to the Edenwoodians. I can see many happy faces here. And the reason is simple, that we are here celebrating our popular annual festival EDWU after a long time. But if we go down the memory lane, we realize that this pandemic has led to dramatic loss of life worldwide. And during these times, the frontline workers have done a lot for us. Okay? They have been there to care for us. But during this, have you ever realized that they have sacrificed their family time, leisure, and helped us deal with this situation? So, here's presenting Hasya Rasa, beautifully choreographed by Mrs. Swapnali Puranik, who's also the leader of this group of angelic 10-year-old Ribha girls. The names are Sanvi Puranik from Poplar, Durga Kale from Poplar, Saisha Wagmare and Adya Jha from Bay, Siddhika Shukla from Regency A. This is their humble effort to show us the challenges faced by these frontline workers while they served us. So please give them a big round of applause. Everybody for the girls. Let's hear it for the girls, Ribha girls. That was lovely performance, a really lovely performance. Over to Ananya Kundetkar, who will be introducing the next performance. Hi everyone, I'm Ananya Kundetkar from Cyprus and I hope you all are enjoying this evening. Can I get a yeah? Louder please. That's great. I'm here to introduce to you your next performance from the Funky Blast group. Humanity needed clearing up after the First World War, and it was a famous comic actor who taught everyone to laugh without saying a word, to laugh through expressions and actions. He was instrumental in getting one of the most important rasa, that is, the Hasya Rasa or comedy in the international film industry. I'm sure you all must have already guessed. Yes,
I'm talking about none other than the legendary comic icon, Charlie Chaplin. Life is a play that does not allow testing. So sing, cry, dance, laugh, and live intensely before the curtain closes and the piece ends with no applause. So let us welcome the young Charlie Chaplins of Eden Woods, Riyan Sapkare and Hussein Harharwala from Bay, Mihir Panjane from Laurel, Harsh Detkar from Sadar, Utkarsh Salonke from Linden, Aditya Devarkar from Willow. The team leader is Mrs. Vandana Sapkare and the dance is choreographed by Mr. Anil Singh. Can we have a huge round of applause for them? Woo! हम थे वो थी हम थे हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना हने प्यार हो गया हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना हने प्यार हो गया खोया मैं कैसे उसकी बातों में कहता हूँ तुम तो लेने दो हा खोई वो कैसे मेरी बातों में कहता हूँ तुम तो लेने दो हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में कहता हूँ तुम तो लेने दो हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना चली तेरी सवारी जहाँ संग चला मैं तेरे वहाँ फैन हूँ बेबी तेरा लगा हूँ पीछे तुम चले की तरह चाहे कितना भी डांट छोड़े ना साथ बलमा ये तेरा नाच जिंग 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 जिंग
Hasya Rasa, and that was amazing by the Funky Blast Boys. Can I have Swati on stage to introduce the next performance? Thank you, Annie. Thank you, Annie. Sorry. So after the high energy Zingat performance, let's gear up for Fatakdi Girls. I'm Miss Swati Parera from Laurel, really happy to be part of this program. This group of girls is probably one of the handful who have continued to be part of this program since they were 4-year-old to the teen phase they are in now. Their bond only got better, and today once again will showcase their dance under the name they have had since the beginning, Fatakdi Girls. They are presenting Veer Rasa. This Rasa is an embodiment of energetic and unrelenting nature. The act is about the Indian soldiers, their anguish and their determination to do or die for the country. The set is choreographed by Miss Shruti Bhalekar Singh, who has performed in various reality shows. She is Zee Yuva Apsara Ali Fame Top 6 contestant. Let's welcome Saisha Shetty from Laurel, Shriya Bhope and Ashmika Ghosh from Regency B, Ananya Agrawal from Regency A, Yashashri Shenoy from Maple, and Chahat Manik from Bay. Let's hear it up, guys. राजस्थान की तपती धूप में खुद को तपाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है, घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। लड़ता रहूंगा तब तक जब तक खून का आखिरी कतरा बाकी है। रखवाला हूं हिंदुस्तान का, कसम हमें भारत माँ की है। घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैबल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े
कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर हो जाए वंदे वंदे। क्या बात है, वेरी गुड। आई लव द एनर्जी एवरीबडी हैज टुडे। वेल वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक नाउ। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जाने की इजाजत है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप सारे आए हैं, इतने अच्छे से चेयर कर रहे हैं, तो जो परफॉर्म कर रहे हैं हम सबको इसकी बहुत बहुत जरूरत है। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर। Of course, you can feel free to go and have food from the food trucks that we've arranged for this time. I think the EWCA has really gone out of the way to make special, unique and exciting arrangements this year. EDWU 2022. In this little break, what we're going to do is have our chief guest over in some time and also felicitate young achievers in the complex. Achievers who have brought home very good academic performances. We'll be acknowledging and appreciating them. So I'd love all of you to please kindly continue paying attention and cheering everybody on stage. Is everyone having a good time? बस अभी भूख लगी इसलिए सारे चले गए फूड ट्रक की ओर, तो फिर यहाँ पर तो रिस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है सबको. But I am sure everybody is having a good time. Everybody's been cheering very, very well. So thank you so much for that. बहुत बहुत शुक्रिया. But yes, I cannot disagree कि foodie trucks are looking very tempting. तो yes, अगर आपको जाना है तो please जाइए, enjoy कीजिए. पर जब परफॉर्मर्स स्टेज पर होंगे तो जरूर जहां कहीं भी आप खड़े हो, चाहे घर पर से भी आप देख रहे हो, चीयर करना नहीं भूलिएगा. जरूर चीयर करते रहिए. Yeah, thank you so much once again. It's been a wonderful performance so far. Half the performances are done. और हैं, काफी सारे हैं. बच्चे बूढ़े सभी आ रहे हैं स्टेज पर. We are trying to give an opportunity to everyone. But right now we are going to call upon everybody. The achievers on stage. We'll have our chief guest also arriving very, very soon. She is a senior police inspector, Shrimati Sulabha Patil ji. वो जल्द ही आएंगी स्टेज पर. This is clearly a stage where we must thank him for what he's done for us. Can I also invite Roshan Mandot? Roshan is not available, I believe, but Jaideep Roy and Mahesh Penzane. Can I have them on stage, part of the federation?
Also members of the Eden Woods Cultural Association, Mrs. Rajani Pitray, who's the chairperson, Dr. Archana Krishnan, the secretary, Mrs. Akshata Shetty, joint secretary, and Mrs. Bipasha Roy, the treasurer. Mahesh Tiwari ji, can I have you on stage? You are a member of the federation is what I'm told. Mahesh Tiwari ji, क्या आप please stage पर आ सकते हैं? इन सबके चेहरे अच्छे से देख लीजिए. अगली बार कोई प्रॉब्लम हो तो इन्हें पकड़ना है आपको. फेडरेशन वालों के चेहरे तो बहुत अच्छे से देख लीजिए, पर कल्चरल एसोसिएशन में आपको अगर परफॉर्म करनी है या आपको कोई नया एक्ट करना है तो ये है यहाँ सारे. The beautiful divas that we have here. I must thank Rajani especially because I remember through the lockdown, whenever I needed help, whenever anybody actually needed help, she went out of her way to give contacts, details, from ambulance services to blood banks to anything and everything at any time of the day or night. She was available and we didn't even know each other. Just by the fact that we were members of the complex, and of course she has a very big heart. She was always available to help. And that goes for everyone actually. Over here in the team. तो I hope आपने चेहरे अच्छे से देख लिए हैं. हाँ, रघुनाथा जी तो आप पहचानते ही हैं बहुत अच्छे से. जयदीप जी, महेश जी, who've come on stage. Two Maheshs on stage. तो महेश तिवारी जी, नाम भी ध्यान में रखिएगा. Class which provides quality education from 8th to 12th grades. They also specialize in small batches. For students, provide individual attention to each child. There are also group tuitions for HSC, CBSC, ICSC and ISC boards. On behalf of EduPoint, of course, she's here with certificates and has also sponsored the gifts for all the children with academic excellence. So right in the beginning, I'd like to call upon Sania Yogesh, Standard 12 from 4A Birch. In the year 2020, the year of the lockdown, Sania has managed to achieve 98.5% people. Can we hear it for Sania? Sania, congratulations. Ishan Vimal from 11D Laurel. Standard 12 again in the year 2021 and 93.60%. Can I have Ishan Vimal on stage, please? बेटे को फिर पढ़ाई में लगा दिया आपने. क्या कर रहे हो आप मतलब? I believe he's traveling. He probably has moved cities for further studies. Thank you so much, Mr. Vimal. Congratulations to you. Krutika Roshan Mandot. Krutika Roshan Mandot. 3A Birch, 12th standard again, 2021, 92%. Can we have maybe her parents, one of her parents to come up on stage? Krutika Roshan Mandot. Kinjalisha Khobragade. Kinjalisha Khobragade, 15D Willow. Standard 12 again, 2021. Kinjalisha, if you're around, please come. Krutika's mom's here. Congratulations. Archana, congratulations. Well done. Krutika को आप बधाई हमारे तरफ से जरूर दीजिएगा. Kinjalisha Khobragade. Congratulations. 15D Willow. Standard 12, 2021, 87.4%. Kashyap Anil Kumar. Kashyap Anil Kumar, 6A Seda. Standard 12, 2022. 86.8. 86.8. Kashyap, congratulations. And we're now moving to Standard 10. Swara Gujarati from 20C Regency Park B. 2022, year of achievement, 98.5%. 98.5%. Swara Gujarati, congratulations. Well done.
EduPoint student. Sridevi is really proud. That's the secret. Sridevi is right here. You can catch hold of her also if you're really worried about your child's academic performance. Sridevi यहीं है, कहीं नहीं जा रही हैं, तो आप उनसे special discount होगा शायद हमारे लिए ना? Yeah? She says yes, of course. She said it loud. I could hear it. And I'm bringing it out to you. So please pay heed to that. Don't forget. Ananya Kundetkar, 7DC Cyprus, Standard 10, 2022, 97.33%. मुझे ये समझ में नहीं आता है ये 1% से भी क्यों रुक जाते हैं 100 ही ले आते यार सारे के सारे. Congratulations, Ananya. She was also part of my team. She did some introductions, an all-rounder, I must say, Ananya. Atharva Date, 2D Cyprus, Standard 10, 2022, 95.83. 95.83. Atharv, can we have you on stage, or maybe one of the parents? Or maybe a neighbor will also do, if you have very loving neighbors. Come on, anybody? No? Okay, Atharva, I guess we'll hold it for you. Shweta Mahesh, 94.8. Shweta Mahesh from 9D Regency Tower A. Shweta Mahesh. Sridevi ji is going to take care of her. Sridevi ji, you have a clout here, I must say. EduPoint it is. Shankhe Sagar Shahasane. Shankhe Sagar Shahasane from 14A Linden. Standard 10 again, 2022, 91.40. Is he here? Shankhe's parents? No. Okay. We'll hold it for him. Harit Pandya. Harit Pandya. Beta kahan reh gaya? Aa gaya. Very good. Harit, come. Congratulations. Also a sportsman that he is. A very, very good sportsman. And you've managed to bring home 88.16%. Kya baat hai? Very good. Congratulations. Ronak Roshan Mandot. These are some state level awards we're going to talk about now here. From academic performances to state level awards in different fields. Ronak Roshan Mandot, 3A Birch, Homi Bhabha Exam 2022, gold medal to Ronak Roshan. Is Ronak here? Is that you, Ronak? Come. Well done. Oh my God, you are coming from class, are you? NASA it is it? Or ISRO? Where are you headed? Huh, Ronak? NASA or ISRO? Where are you headed? NASA only. What about ISRO? Don't leave behind ISRO, yeah? ISRO's done some fantastic job in the past few years. Not fair. I'm not saying it out here on the mic. Not fair. But well, NASA it is for you, Ronak. Well done. Tejaswini Bhise. Tejaswini Bhise. GRA1, ground floor is that is? Ground floor Oak. She's the winner in a beauty contest. Mrs. Konkan Maharashtra Saundarya Samragini. Kya baat hai? Congratulations. This was held in different parts and cultures of Maharashtra. Congratulations, Tejaswini. Thank you so much for making everyone proud. We're now moving from state level awards to national level award. Agastya Kasture from 12C Willow, International Maths Olympiad Class 5 in the year 2021. Zonal rank 7th, Maharashtra and Goa. Well done, Agastya. Are you turning into a human calculator very soon, Agastya? Are you? You don't know? Okay, well done. But for now, you have done a wonderful job. Thank you so much, Agastya. Thank you very much. I'd like to hand over the mic to you to say a few words to everyone here. Can you? Yeah, she says suddenly. You're prepared always. Come on. Good evening, everyone. It's a pleasure here to be standing here and distributing the academic and the other awards. And we wish all these children
all the very best for their future. EduPoint, as you know, is just across the road. We aim to provide, classes for students and provide them with individual attention, which I guess is the need of the hour. And as you know, post-COVID, academics has really taken it's like the standards have fallen, not blaming the student or the schools or colleges. But overall, we all know that children found it difficult to learn online. So our effort at EduPoint this year and from next year onwards, is to, help students come out of the, kind of education that they had in the last 2 years and help them get back on track and be able to do well in their academics in school. Thank you. Thank you so much, Sridevi. It's always required. Parents are always scampering and looking around for guidance, and it's good to have someone with experience, with achievement, and performance that the children have already given. So it kind of instills faith in everyone, and that's a good thing, I believe, to have access to resources that are good and also progressive. Well, we already have the chief guest who has arrived, Srimati Sulabha Patil. I'm going to try and speak in Marathi now, so please bear with me. श्रीमती सुलभा महादेव पाटील या मूळच्या सातारा येथील कराड तालुक्यातील एका शेतकरी कुटुंबातील आहेत. 1990 मध्ये त्यांची पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती झाली. त्यांनी ठाणे नगर, कोपरी, नौपाडा गुन्हे शाखा ठाणे, वागळे इस्टेट, वाहतूक शाखा येथे कर्तव्य बजावलेली आहेत. महिला अधिकारी म्हणून वेळोवेळी वरिष्ठांकडून त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आलेले आहेत. ठाणे ग्रामीण येथे 7 पाटी पोलीस स्टेशन, श्रीनगर पोलीस स्टेशन, डायघर पोलीस स्टेशन विशेष शाखा येथे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून कर्तव्य बजावून सध्या चितळसर मानपाडा येथे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक या पदावर कार्यरत आहेत. तसेच ठाणे ग्रामीण येथे असताना एकूण 87 महिलांची कुंटणखान्यातून सुटका करून त्यांना न्याय मिळवून दिला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा येथे तपास करीत असताना उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांनी उत्तम तपास केल्याबद्दल मंत्रालयात कळवून त्यामध्ये देखील त्यांना पारितोषिक देण्यात आलेले आहे. त्यांची 32 वर्ष सेवा झालेली आहे. लेट्स पुट आवर हँड्स टुगेदर फॉर द चीफ गेस्ट ऑफ द इव्हनिंग, सीनियर पोलीस इन्स्पेक्टर Srimati Sulabha Patil. One of the people who works with me at home, she was talking to me very highly of her. और वो बता रही थी कि ह्या खूप समजून सगळं काम करता आमच्या बरोबर आणि सगळ्यांना घेऊन बोलून समजूनच आम्हाला सगळ्या गोष्टी कळवतात आणि आमची खूप सपोर्ट करता. अशी माझी पण माझ्या घरी जी येते काम करायला ती पण तुमच्याबद्दल बोलत होती आज. Thank you so much. We're very, very proud to have you amidst us. We're very, very proud की तुम्ही कुठल्याही जेंडर स्टिरियोटाईपला न म्हणजे ठेवता पुढे आलात आणि सगळ्यांना इट्स इन्स्पायरिंग टू ऑल विमेन ॲज वेल एज मेन ओव्हर हिअर टुडे दिस इव्हनिंग. थँक यू सो मच. I would like Mr. Raghunatha to felicitate Srimati Sulabha Patil with a lovely bouquet. Thank you so much. Rajni will be handing over a little gift to Sulabha ji. सगळ्यांशी तुम्ही छान बोलता, सगळ्यांना समजवता, एवढा वेळ काढून तुम्ही यू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस. तर आज सुद्धा तुमच्याकडून थोडेसे शब्द सुलभाजी. नमस्कार. ईडनवूड सोसायटी फेडरेशनचे सर्व
पदाधिकारी आणि सोसायटीचे सर्व मेंबर्स आणि कल्चरल असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी आणि पार्टिसिपेट करणारे मेंबर्स, या ठिकाणी मला आता पुन्हा दुसऱ्यांदा बोलावलेलं आहे आणि पुन्हा अपेक्षा करतायत की मॅडमनी काहीतरी बोलावं. मी ज्या ज्या ठिकाणी जाते आणि बोलते तेव्हा आमचा फायदा कसा करून घ्यायचा यासाठी बोलते. मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की तसं बघितलं तर पोलिसांची संख्या खूपच कमी आहे आणि यापूर्वी मी सांगितलंय की प्रत्येक ठिकाणी जो व्यक्ती बाहेर रस्त्यावर आहे, सोसायटीमध्ये आहे, तो आमचा साध्या वेशातला पोलीस आहे. आणि खऱ्या अर्थाने मी आता इथे बघते इडनवूडचे जे पदाधिकारी आहेत ते खरोखर म्हणजे तुम्ही नियुक्त केलेले जरी असतील तरी तुमचे नियुक्त केलेले पदाधिकारी म्हणून काही तक्रारी असतील तर ते आमच्याकडे घेऊन येतात आणि तुम्ही कसे साध्या वेशातले पोलीस आहात हे स्पष्ट करून देतात. कारण की काल छोटासा इन्सिडन्स बघितला, सायकल चोरी होती, परंतु आपले रघुनाथन सर आहेत, त्यांनी फुटेज काढून पूर्णतः सगळी माहिती तयार करून ती आमच्याकडे केस दिलेली आहे. म्हणजे हा जो तुमचा पोलीस म्हणून सहभाग आहे तो खूप मोठा आहे. आणि त्याचप्रमाणे मला असं सांगायचं आहे, एक सगळ्यांना विनंती आहे की मी आता सांगता सांगता बऱ्याच गोष्टी आमच्या फायद्याच्या सांगत आहे, त्याचप्रमाणे त्याचा फायदा तुम्हाला सगळ्या सोसायटीतल्या लोकांना होणार आहे. तसं बघितलं तर सायबर क्राईम आहे, सगळे घरातले सिनियर सिटीजन असतात, खूप सारे पैसे त्यांच्या अकाउंटमध्ये असतात रिटायरमेंट नंतर आणि अशा वेळेला त्यांना सांगितलं जातं की लाईट बिल भरायचं आहे आणि तुम्ही तात्काळ तुमची लाईट कट केली जाईल आणि तुम्ही पैसे भरा, अशा प्रकारे सांगितलं जातं आणि लोक भांबावून जातात आणि तात्काळ कोणतंही ॲप डाउनलोड करतात आणि ते सांगतात पहिल्यांदा 1 रुपया भरा. प्रत्येकाला असं वाटतं की 1 रुपया भरला तर काही हरकत नाही आहे. 1 रुपया भरतात आणि फटाफट त्याच्या अकाउंटमधून पैसे जायला सुरुवात होतात आणि एवढी मेहनतीची रक्कम अशीही निघून जाते, लक्षात येत नाही. आणि ह्या फसव्या ज्या स्कीम आहेत त्या वेळोवेळी ते फंडा बदलत असतात. काय म्हणजे सध्याचा काय प्रॉब्लेम आहे, 5G निघालेलं आहे, तर 5Gसाठी सुद्धाही आता सांगतात की तुम्हाला 5G लगेच मिळेल, 1 रुपया अलाउड करतात आणि पैसे फटाफट जातात. तर कोणीही असं सांगत नाही की तुम्ही पैसे भरा. आधी खात्री करा, कोणतंही ॲप डाउनलोड करू नका आणि स्वतःच्या मेहनतीचे पैसे घालवू नका. कारण की ह्या केसेस जेव्हा आमच्याकडे येतात त्यावेळेला त्या केसेसमध्ये हे लोक कुठेतरी बिहारमध्ये बसून पैसे काढत असतात आणि सहजासहजी ते सापडत नाहीत आणि जेव्हा सापडतात त्यावेळेला पैसे खर्च झालेले असतात. अशा वेळेला तुमच्या केसचाही बऱ्यापैकी उपयोग होत नाही. त्यापेक्षा आपणच आधी सावधान राहिलं तर बऱ्यापैकी बरं होईल. त्याच्यासाठी कोणीही विनाकारण कोणतंही ॲप डाउनलोड करू नका आणि स्वतःच्या मेहनतीचे पैसे घालवू नका. त्याचप्रमाणे दुप्पट रक्कम करून देतो असंही बऱ्याच जणांना सांगितलं जातं आणि ज्या फसव्या योजना सांगितल्या जातात आणि लोक पैसे भरत राहतात आणि काही दिवसांनी 1-2 महिने त्यांना चांगले रिटर्न्स मिळतात आणि नंतर बघितलं तर पैसे यायचं बंद होतं आणि तोपर्यंत जे रिटर्न्स मिळालेले असतात तेही पुन्हा त्याच्यामध्येच गुंतवतात. अशा प्रकारे लोकांचे पैसे जातात, त्यांनाही कळत नाही. आणि हे लोक शक्यतो सिनियर सिटीजन असतात, सेवानिवृत्त लोक असतात, अशा लोकांनाच टार्गेट करतात आणि आपली खूप महत्त्वाची रक्कम आहे अशी खूप महत्त्वाची रक्कम आपली जात असते आणि सहजासहजी लोकांना लक्षात येत नाही. त्याचप्रमाणे सायबर क्राईममध्ये मुलांच्या बाबतीतही बऱ्यापैकी फसव्या घटना घडतात. बऱ्याच वेळा इंटरनेटवर आहे ना साधीशी गोष्ट असते, मुलांना असं सांगितलं जातं की तुम्हाला म्हणजे समोरची व्यक्ती काही माहिती नसते आणि जो डीपीला फोटो असतो तो वेगळाच असतो.
कदाचित कार्टून असतं, कदाचित लेडीजचा असतो. अशा वेळेला मुलांना सांगितलं जातं की फ्रेंड रिक्वेस्ट दिली जाते आणि हे मुलं फ्रेंड रिक्वेस्ट लगेच स्वीकारतात. आणि अशा वेळेला नंतर लक्षात येतं त्यांना की त्यांच्याशी बोलत बोलत समोरची व्यक्ती खरं तर जेंट्स आणि विकृत असते. आणि अशा विकृतीमुळे मुलांना बऱ्याच वेळा असं होतं की खूप चॅटिंग करतात, खूप वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे त्यांना माहिती दिली जाते, त्यांच्याकडून त्यांच्या कुटुंबाची माहिती घेतली जाते. आणि ज्या वेळेला प्रत्यक्षात त्या मुलीला भेटायला बोलवलं जातं त्यावेळेला एखादा मुलगा असतो आणि तिच्याकडून काहीतरी गैरकृत्य, लैंगिक कृत्य करून घेतलं जातं. तर अशा वेळेला त्या मुली भिडस्तपणे जी काही आपली पर्सनल माहिती दिलेली असते आणि ती आपल्या कुटुंबातल्या लोकांना कळू नये यासाठी मुलीसुद्धा बळी पडतात. तर अशा वेळेला आपल्या मुलांनाही थोडंसं जागरूक ठेवा. इथं आता काहीतरी कारणाने सगळे जमलेले आहेत, त्याच्यामुळे हा विषय मी सांगत आहे कारण की मुलांच्याही कानावर तो पडावा. त्याचप्रमाणे आता वाढता प्रश्न आहे सगळ्यांच्याच पुढे. सगळे पालक असे म्हणत असतात की म्हणजे माझ्या कुटुंबात काय घडतंय हे कोणाला कळू नये याच्यासाठी खूप सारे दक्ष असतात. पण तसं बघितलं तर हे आजूबाजूला सगळ्यांना माहिती असतं आणि नंतर कुटुंबात कळत असतं. माझ्याकडे जेव्हा तक्रार घेऊन येतात त्यावेळेला बऱ्याच सांगतात की माझा मुलगा ड्रग ॲडिक्ट झालाय, अल्कोहोल घेतो. आणि अशा वेळेला जो प्रॉब्लेम होतो आणि प्रत्येकाचं बघितलं तर प्रत्येकाच्या कुटुंबामध्ये एकच मुलगा किंवा एकच मुलगी आता सध्या असते. आणि आपण खूप असं म्हणजे एका कुटुंबाचं पूर्ण नुकसान होण्यासाठी ही घटना घडत असते आणि सगळेजण आपण उघड्या डोळ्यांनी बघत असतो. तर माझ्या इथल्या सगळ्या सदस्यांना एकच विनंती आहे की अशा जर काही घटना घडत असतील तर कदाचित पोलिसांची मदत घ्या. आम्ही पोलीस म्हणून प्रत्येक गोष्टीमध्ये इंटरव्हेन करू आणि असं नाही होणार की तुम्ही आमची मदत घेतली तर आम्ही त्याच्यामध्ये मुलांविरुद्ध गुन्हेच दाखल करू. फक्त मुलाला त्या याच्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि आजूबाजूचं वातावरण बदलण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. आणि अशाच वेळेला जर ते एक मुलगा जर त्या व्यसनापासून दूर झाला तर ते कुटुंब पूर्ण वाचतं. तर हे प्रत्येकाने थोडंसं लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपल्या बाजूला जरी काय घडत असेल तर ते आपल्या बाबतीत घडतंय, आपल्या सोसायटीत घडतंय. तर त्याची माहिती तुम्ही पोलिसांना देणं आवश्यक आहे आणि पोलीस त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन करतील. कुठल्याही प्रकारे कोणालाही त्रास होणार नाही अशा प्रकारे आम्हीही त्याच्यामध्ये दखल घेतो. बऱ्याच मुलांना आम्ही सोडवलेलं आहे असं. त्याचप्रमाणे मुलींना सुद्धा अशाच प्रकारे जाळ्यामध्ये ओढलं जातं. आणि काय होतं की मुली जेव्हा एकदा त्याच्यामध्ये पडल्या तर त्यातनं त्यांना निघणं मुश्किल होतं आणि प्रत्येकाला असं वाटत असतं की हा छोटासा तिच्या आयुष्यातला जी घटना असते ती घटना म्हणजे तिच्या एकटीच्याच बाबतीत घडलेली आहे आणि तिला असं वाटत असतं की याच्यातून जर बाहेर निघायचं असेल तर बऱ्याच वेळा आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही असा समज होतो. आणि बऱ्याच घटना अशा घडतातही. पण आम्ही बऱ्याच वेळा अशा लोकांमध्ये जातो. काही कुटुंबातले पालक असतात, कधी कधी सोसायट्यांमधली लोक असतात, ते आमच्याकडे येतात आणि आम्हाला सांगतात की मॅडम अशी अशी घटना घडलेली आहे. तर आम्ही निश्चितच ते फोन नंबर्स असतात, काही असतात, त्याच्यावरून आम्ही त्यांना शोधून काढतो आणि त्या मुलांविरुद्ध कारवाई होते. तर प्रत्येकाने थोडंसं लक्ष घातलं पाहिजे की आपल्या बाजूला काय घडतंय. आपल्याच सोसायटीतली एखादी मुलगी बाजूला आहे, कोणीतरी व्यक्ती आहे, कदाचित मोठ्या वयाची असेल आणि तिचा जर काय असा लैंगिकदृष्ट्या वापर होतोय. लैंगिकदृष्ट्या वापर म्हणजे असं नाहीये की तिला वेगळ्याच प्रकारे काहीतरी करायला पाहिजे. तिची सतावणूक करणं, तिला स्वतःच कॉन्टॅक्ट करणं ही सुद्धा लैंगिक सतावणूकचीच घटना आहे. त्याच्यामुळे पोलीस त्याच्यामध्ये इंटरव्हेन करतात आणि त्या मुलीला त्याच्यातून बाहेर काढतात. बऱ्याच मुलींचे आम्ही असं लाईफ वाचवलेलं आहे. आत्ताच मला माझी माहिती सांगितली त्याच्यामध्ये आम्ही 87 मुलींची अशी सुटका केलेली होती आणि त्यांना त्यांच्या कुटुंबामध्ये परत पोहोचवलेलं असतं. बऱ्याच वेळा असं होतं की मुलांनाही थोडं शौक वाटतो की टीव्हीमध्ये ज्या घटना घडतात त्या सगळ्या आपल्या बाबतीत घडायला पाहिजे. तिथली जी श्रीमंती आहे तिथं कधीही असे कोणी साधे कपडे घातलेले आणि असे वावरताना दिसत नाहीत. प्रत्येक वेळेला छान लिपस्टिक, पावडर, मेकअप केलेल्याच व्यक्ती दिसून येतात.
आणि प्रत्येकाला असं वाटत असतं की आपलं लाईफ ही तसंच असावं, पण नाही आहे. सामान्य लाईफ आहे, आपलं रोजचं काम करणं आवश्यक आहे आणि आपले आईवडील जेव्हा अर्निंग करतात त्याच्यावर आपलं जीवन चाललेलं असतं. जर अशा वेळेला जर त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून तुम्ही फक्त हे टी व्हीतल्या ज्या घटना घडतात त्याच प्रकारे आयुष्य जगायचं आहे असं म्हटलं तर ते थोडंसं हे पण बघायला पाहिजे की कष्ट महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यानंतर हे सगळं आपण चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींकडे म्हणजे त्या फक्त छान छौकी दुनियेकडे न बघता प्रत्येकाने रिअल लाईफ काय असतं आणि त्याच्यामध्ये किती मेहनत करणं आवश्यक आहे आणि आपल्याला इथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपले पालक असतील, नातेवाईक असतात, किती कष्ट घेतात. ह्या गोष्टीचा जर विचार केला तर निश्चितच मुलांना त्याचा फायदा होऊ शकतो आणि प्रत्येक सोसायटीतले लोक आहेत आपल्या सोसायटीतल्या मुलांना वाचवू शकतात. तर ह्यामध्ये सगळ्यांनी सहभाग घ्यायला पाहिजे. मी जसं म्हटलं की आत्ताच रघुनाथन सर माझ्याकडे आले होते आणि डॉग ना खायला घालतात, फीडिंगसाठी जे लोक येतात त्यासाठी त्यांची कमिटी बनवायची चाललेली होती. तर अशीच कमिटी आपल्या सोसायटीतली जी मुलं आहेत त्यांच्या बाबतीत बनवली आणि त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्शन केलं तर निश्चित बऱ्यापैकी फरक होऊ शकतो आणि तुमचा ॲन्युअल फंक्शन जो आहे त्याचाच एक भाग दिसतो. याच्यापूर्वीही मी बघितलं तेव्हाही सगळ्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे पार्टिसिपेट केलेलं होतं. खूप साऱ्या घटना आहेत सांगण्यासारखा. कार्यक्रम तुमचा पुढे न्यायचा आहे. जर काही कोणाला अपेक्षित असेल की मॅडम तुम्ही ह्याविषयी सांगा तर कोणी प्रश्न विचारले तरी चालू शकतात, त्याच्या बाबतीत मी बोलेल. प्रत्येक गोष्टीवर बोलायला आता तेवढा वेळ नाही आहे, तुमचा फंक्शन आहे तर, कारण की सगळ्यांचे चेहरे असे दिसत आहेत की पुढचे कार्यक्रम बघायचे आहेत. वेळेचं बंधन सगळ्यांना पाळायचंच आहे, त्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आपण पुढे नेऊया. याच्यानंतरही सोसायटीची मीटिंग वगैरे असेल त्यावेळेला मी स्वतः येईल आणि सगळ्यांमध्ये सहभागी होईल. आज तुम्ही मला इथे बोलवलं. खरं तर मी स्वतः इथं ॲज अ पोलीस ऑफिसर म्हणून चितळसरतर्फे आलेली असेल तरी माझं असं म्हणणं आहे की मी पोलीस ठाणे आयुक्तालयातर्फे महाराष्ट्र पोलिसातर्फे तुमच्याकडे आलेली आहे. कधीही कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर काही विचार न करता पोलीस स्टेशनमध्ये या. माझा नंबर इथे तुमच्या पदाधिकाऱ्यांकडे आहे. कोणत्याही प्रॉब्लेमसाठी आम्ही म्हणजे तुम्हाला असं वाटत असेल जास्त इंटरव्हेन नाही करावं तर थोडा आम्ही मदत करू आणि त्यातून तुम्हाला बाहेर काढायचा प्रयत्न करू. कदाचित तुम्हाला आमची आवश्यकता नाही भासणार पण तुमच्या आजूबाजूच्या कुणाला फ्रेंड्सना आवश्यकता असेल अशा गोष्टीमध्ये सुद्धा तुम्ही आमची मदत घेतली तर आम्ही नेहमी मदतीसाठी तयार आहोत. एवढे बोलून मी मला इथं बोलवल्याबद्दल पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार मानते आणि माझे 2 शब्द संपवते. Thank you so much. Dhanyavad. I think she's raised extremely critical points. There are issues that are running around us these days, from cybercrime to sexual assaults to even addiction of different kinds. So thank you so much for raising this for all of us. Sagarna Karawala. And very forthcoming that she has been, and she's offered her services directly to you, and I think that is commendable. I'd now like to move on to 2 more people that we would love to felicitate this evening. 2 women, Mrs. Nilima Bhadgaonkar and Mrs. Bharti More. Can we please have you on stage? You know, while growing up, we were all pushed for sports. We are asked to take part in sports, and we've seen mostly, well, now it's not the case, back maybe when we were growing up, much older adults were growing up, it was all men who used to take up sports, and women used to do it for a few years and give up on it. But having family behind them, but continuing to achieve great heights in athleticism of different kind, Nilima Bhadgaonkar is the brand ambassador for one of the best and finest triathlon, duathlon event, Bergman, Kolhapur, organized by Deccan Sports Club. There's another one that's scheduled on the 29th of January. And Bharti has successfully completed Bergman Triathlon Olympic distance, swimming 1.5 kilometers, cycling 40 kilometers, and a run of 10 kilometers at Bhima Shankar. Thank you so much. You girls are breaking the glass ceiling. They both have 2 children each, but they are managing and balancing everything so beautifully. Nilima and Bharti, quickly, few words from both of you. Nilima, would you like to say something? First of all, thank you EWCA
for this felicitation program. I would only like to say that everybody should invest 30 minutes per day for their fitness and health. And that way our society and our nation will become more healthier. Thank you so much. Hello. Thanks EWCA for the opportunity to be on the stage. Yeah, I would also like to say the same. Fitness is the most critical thing. We should all pursue it. And yeah, of course, this is not possible with the help of, without the help of our family members. I would like to dedicate this to my father-in-law and my husband, for sure. Thank you so much, Nilima. Thank you so much, Bharti. I think we've been talking about health and fitness for many years now, especially lockdown and pandemic ने तो हमें दिखा दिया और शायद ये पुख्ता कर दिया कि हमारे health का ख्याल तो खुद ही को रखना है. And they are two very good examples we have over here within our complex that we can take inspiration from. And I'm sure everybody invests in health. We can always keep doing more. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Sulbhaji. Thank you all the Federation members, from the Secretary to the other members of the Federation, as well as the EWCA members, Rajni, Akshata, Vipasha and Archana. And I guess we will now head to the second leg and the last leg of the performances this evening. Can I once again have everybody's attention? Khana pina lekar aakar baith jaiye apni chair par. And once again a request to everyone. मुझे पता है काफी एक्साइटमेंट है और आप अपने बच्चों का या अपने बीवियों का या पति का परफॉर्मेंस कैच करना चाहते हैं और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालना चाहते हैं, जरूर कीजिएगा. But keep in mind there are many viewers sitting behind you, so don't block their view. That's all the request I have for you, and we're moving over to the next performance. The women would have killed me just now. Literally killed me. Yeah, well, I have to take this moment to also introduce the EWCA members, as well as those who have sponsored to make this event such a success. From the arrangements of the stage to, the kiosks that we see around here, to the food trucks. A lot of people have come together for this and they have also sponsored. So I'll first start with the team introduction of EWCA. Mrs. Rajni Pitare, the chairperson. Rajni, kudagela tumi. Dr. Archana Krishnan, who's the secretary. Mrs. Akshata Shetty, who's the joint secretary. Bipasha Roy, the treasurer. Mayura Bhope. Bhairavi Desai. Foram Pandya. Kinjal Joshi. Netra Paradkar. We also have a few members who aren't here today, but we are thinking of them. They're here in spirit. Mrs. Seema Singh and Mrs. Dipali Javkar. Deepa Dubey, Tapasya Ghosh, Meghna Jog, Mercy Alex, Triveni Mahajan, Smita Alkari, and Reena Mattu. Can we have everybody on stage? Yes, I think almost everyone. These beautiful women have come together to make this entire event a success this evening. Can I please have a really thunderous applause for them? We all have family behind us, but we take extra special interest in such events and opportunities to bring everybody together. So in a big way, thank you to all these women and the Federation members as well for all the support. देखिए यहाँ पर भी social media, मतलब photo के बगैर तो कोई stage से निकलेगा ही नहीं. So a few more seconds, I guess, for the photograph. And then we continue with the programs. Thank you for being so proactive. Thank you so much. Thank you so much. Quickly, a word and shout out and a big thank you to all the sponsors also. Toyota Lacozi,
to Vimal Deep Group from Laurel, Dr. Archana Krishnan herself from Juniper, Midas Jewelers, Hiranandani Meadows, Mrs. Kavita Chandwani from Maple, HDFC Bank, Aditya Birla Sun Life Insurance, Tata AIG Life Insurance, Mrs. Deepa Dubey from Regency B, and Mr. Vikram Khurana from Maple. Thank you once again to everyone, and we'll continue with the next program. And on my list, can I have the next team member on stage to make the announcement and introduce the next group? Neeta ji? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ, अब आ रहे हैं वो जिन्होंने कभी किया नहीं है डांस। अब आ रहे हैं वो जिन्होंने कभी किया नहीं है डांस, पर अब उन्हें भी चढ़ा है डांस का भूत। तो अब आ रहे हैं वो आपको हंसाने और ठुमके लगाने, मूवर्स एंड शेकर्स, हम सब के अन्ना मिस्टर सुंदर शेट्टी, कार्तिक देवरा, हर्षल चौरकोले, सयाली पवार, ओंकार पवार, अभिनव कौल, मेगा कौल from Aspin, Anil Bhati from Maple, and महेश पंजने from Laurel। तो आपको हंसाने आ रहे हैं मूवर्स एंड शेकर। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। बराबर बोली ना, सबके नाम आए ना। Let's give it up for all the daddies, people. से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया। अपने जिगर को थामो के बैठो, अपने जिगर को, अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो, थामो के बैठो के बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे, बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था।
Let's hear it for the boys once again, everyone. We hope to have more boys, more daddies next year as well, but this one was amazing. Calling on Ananya to introduce the next performance. हंसना है जिंदगी का जेवर, आजमा के तो देख, बदल जाएगा रूठे वक्त का तेवर। ए बंदे जरा मुस्कुरा के तो देख। वादे के साथ आ रहे हैं इस मुशायरे की आन बान शान, विवान कुंडेटकर फ्रॉम साइप्रस, रूपेश पाठक फ्रॉम बर्च, नीरज सिंह फ्रॉम हॉली, and the beautiful icing on the cake, Mrs. Pushpinder Seth from Poplar. Please welcome them with a grand applause. The tempo of the performances may have changed, but the message through this skit is going to be loud and clear for everyone. Let's give it up for everyone on stage once again for Burana Mano. Come on, everyone. Let's hear it for them. Hello. 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 Sound okay? Hello. Hello. So, thank you, Ananya. तो कहते हैं ना, इस संसार की सबसे जबरदस्त और अनोखी रचना होती है एक स्त्री, और जिंदगी का सबसे खूबसूरत लेकिन चैलेंजिंग रिश्ता होता है, एनी गेसेस, शादी का, पति पत्नी का। तो स्त्री और शादी की नोकझोंक को हास्य रस में ढालने की कोशिश के साथ हम आ रहे हैं आज आपके सामने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुष्पिंदर सेठ इजाज़त लेना चाहूँगी इस हास्य मुशायरे को शुरू करने का, जिसका नाम पार्टी से तो लगते पहलवान हैं, किंतु परंतु ये छोटे से युवा नादान हैं। आ रहे हैं विवान कुंडेटकर। नमस्कार, मेरे कविता का शीर्षक है मेरी माँ की साड़ी। सुनाना चाहता था मैं आप सबको एक मार्मिक कविता, पर जब आप सुनोगे मेरी माँ की साड़ियों की कथा तो समझ ही लोगे हम घर वालों की व्यथा। हुआ कुछ यूं कि घर में आई बड़ी खुशखबरी की लहर, मगर लगा हो जैसे बरसा हो हम पर कोई कहर। हमारे इकलौते मामा की शादी हुई तय, जोरदार तैयारी शुरू, बोलो श्री गणेश की जय। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा, कंजूसी करने का अब उनके पास कोई बहाना न रहा। माँ ने दर्जनों नई साड़ियों का ढेर लगा दिया, फिर भी कहती अब तक ढंग का कुछ भी नहीं लिया। एक दिन माँ ऐसी रोई कि हम सब डर गए। हमें लगा पड़ोस वाली पिंकी आंटी के बिल्ले सारे मर गए। रोना सुन सबने दौड़ लगाई और माँ को घेरा। माँ एक कोने में बैठी और बीच कमरे में लगा था, सोचो क्या, साड़ियों का ढेरा। हरी वाली के साथ लाल रंग की चोली, इसे पहनकर तो तेजस लगूंगी। सर पीट कर माँ बोली, उस पीली साड़ी में है काले बुट्टे, सब कहेंगे बम्बई की टैक्सी वाली, चलो निकालो छुट्टे। एक
सुंदर सी रंगीन साड़ी मैंने उठाई और माँ को बड़े प्यार से दिखाई। इस पर तो लाली की सगाई पर ही सबने मुझे देख लिया। इतना कहकर माँ ने अपने से दूर कर दिया। फिर पापा ने एक रंग बिरंगी चौखानों वाली साड़ी सजाई। माँ ने कर दी उनकी शाब्दिक धुलाई। कहती, ये तो मैं कभी नहीं पहनूंगी, साड़ी है या तुम्हारी लुंगी। दोस्तों, ये साड़ी का सिलसिला जारी रहा। इससे तो सहनिया हमारे लिए महामारी रहा। 2 दिन में शादी सर पर खड़ी है। अब सबको बता दूं, माँ अभी भी साड़ियों में उलझी पड़ी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ कि साड़ी वह कोई भी पहने, उस पर हो या न हो गहने, लगने वाली तो वह हमारे लिए परी है। सोचो उस आंचल में कितनी ममता भरी है। सोचो उस आंचल में कितनी ममता भरी है। शुक्रिया। बहुत खूब विवान। ये कविता तो बड़ी जबरदस्त थी। आपने लिखी? नहीं, उन्होंने लिखी जो अब तक साड़ियों में उलझी पड़ी है, अर्थात मेरी माँ। क्या खूब। हे भगवान। माँ के साथ साथ एक स्त्री होती है पत्नी या बीवी। रुपेश जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बहुत रिसर्च किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बीवी जो है वो मोबाइल फोन जैसी होती है। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनिए, सबसे पहली बात, दोनों के सामने सर हमेशा झुका होता है। सही कहा रुपेश, सही जोड़ा है ना? हमेशा ही झुका होता है। आगे सुनिए, मोबाइल को चालू रखने के लिए उसे टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है और बीवी को नॉर्मल रखने के लिए टाइम टू टाइम शॉपिंग करवाना पड़ता है। बेहद जरूरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल की आदत छूटे नहीं छूटती और बीवी की बकबक रुके नहीं रुकती। सही फरमाया। मोबाइल के ऐप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना पड़ता है और बीवी समझे, ब्यूटी पार्लर में जा जाकर अप टू डेट होती रहती है। रुपेश जी सही पकड़े। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल के बिना रहा भी नहीं जाता और उसके साइड इफेक्ट्सों को सहा भी नहीं जाता। सेम टू सेम फॉर ना कि थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन मोबाइल फोन और बीवी दोनों ही बदले जा सकते हैं। वेल पुष्पा, आई हेट टू से यू आर राइट रे, पर महंगा कितना पड़ेगा? महंगा तो वैसे भी आज पड़ेगा ही। क्यों मिसेस ख्याति रुपेश पाठक? एंड बाय द वे, आई हेट बीइंग कॉल्ड पुष्पा। नोटेड मैडम, पर मेरी बीवी को तो मत उकसा। उर्वी डार्लिंग अरे हड़बड़ी में मैं अपनी बीवी का नाम तक भूल गया। ख्याति डार्लिंग, अपन घर पे जाके बात करेंगे आराम से। बाय द वे, कितनी डार्लिंग्स हैं आपकी? और ये उर्वी कौन है? मेरी साली है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बारी है। शांतम पापम शांतम। देखो भाई रुपेश, मेरा तो ये मानना है, आदमी या तो समझदार हो सकता है या फिर शादीशुदा। हाँ भाई नीरज, बिल्कुल। जैसे कि औरत या तो खूबसूरत हो सकती है या फिर बीवी। करेक्ट। नीरज, अगर आप ये कहते हैं कि शादी होती है बर्बादी, तो फिर आपने क्यों की शादी? आपकी तो शादी अभी अभी हुई है ना? गुड क्वेश्चन पुष्पिंदर, पर इसका जवाब ये है कि आदमी को अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। वाह नीरज, क्या जवाब दिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि रियलिटी में आदमियों को अप्सरा सिर्फ पेंसिल में मिलती है और औरतों को बादशाह सिर्फ मसालों में मिलता है, और हम जैसे गरीबों को फ्री में मिलती है तो सिर्फ सासू माँ। अब मैं आप सबको सासू माँ का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। हुआ यूं कि एक बार एक सासू माँ ने अपने 3 दामादों की परीक्षा लेना चाहिए। अब इस चक्कर में सासू माँ ने नदी में छलांग लगा दी। अब बड़े वाले दामाद ने झट से नदी में कूदकर अपनी सासू माँ को बचा लिया। सासू माँ ने खुश होकर अपनी मारुति कार उसे गिफ्ट कर दी। अब बारी आई दूसरे दामाद की। सासू माँ नदी में फिर कूद पड़ी।
दूसरे दामाद ने भी झट से नदी में कूदकर अपनी सासू माँ को बचा लिया। अब दूसरे दामाद को मिल गई एक फर्राटेदार मोटरसाइकिल। अब बारी आई तीसरे दामाद की। सासू माँ नदी में फिर से कूद पड़ी। अब तीसरे दामाद ने सोचा मारुति कार तो बड़े को मिल गई, मोटरसाइकिल बीच वाले को मिल गई, अब रह दे के एक टूटी फूटी साइकिल बची है, उसके लिए अपनी जान जोखिम में कौन डाले। उसने अपनी सासू माँ को नदी में डूबकर मर जाने दिया। अगले दिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? उस दामाद के दरवाजे पे खड़ी थी एक चमचमाती लाल रंग की टोयोटा और उस पर एक चिट्ठी लगी हुई थी जिस पर लिखा था थैंक यू सो मच विथ लॉट्स ऑफ लव, आपके प्यारे ससुर जी। बाय द वे, ये लाल टोयोटा किसके ससुर ने गिफ्ट की है? देखना पड़ेगा। नीरज, आपने ससुर जी की बात छेड़ ही दी है तो मैं भी अपने ससुर जी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ यूं कि हमारी शादी में विदाई के समय मेरी बीवी अपने बापू यानी मेरे ससुर जी को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। कहती है सब कुछ सह लूंगी बापू, कैसे भी मैं रह लूंगी बापू, सब कुछ सह लूंगी बापू, कैसे भी मैं रह लूंगी बापू, लेकिन माँ के बिना ना रह पाऊंगी, कैसे मैं जी पाऊंगी। इस पर मेरे सयाने ससुर जी ने जो जवाब दिया वो यूं था। कहते हैं बेटी तेरी दुविधा समझता हूं मैं, बेटी तेरी दुविधा समझता हूं मैं, तेरे आंसुओं को रोकना चाहता हूं मैं, पर जाते जाते इतना सुख मुझे भी दे जा, पति घर अपनी माँ को भी साथ ले जा, पति घर अपनी माँ को भी साथ ले जा। वाह भाई वाह रुपेश, क्या सयाने ससुर जी हैं आपके। वाह 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 वाह। ससुर जी है वही, ससुर जी है। देखिए, सासू माँ का किस्सा हो गया, ससुर जी का किस्सा हो गया। अब मैं आप सबको सारे हस्बैंड्स की तरफ से एक गाना पेश करना चाहूंगा उनकी प्यारी बीवियों के लिए। भाई सिंगर हूं, थोड़ा मोड़ा कुछ तो सुना दूं। तो गाने के बोल कुछ यूं है, गौर फरमाइएगा। ए बीवी तेरे हस्बैंड हम, थोड़ा कर तू हम पर रहम, नेकी पर चले पड़ोसन से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये कहर तेरा बढ़ता रहा, पति तेरा तो घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सर से बाल भी उड़ा जा रहा है, तेरी डांट में ये जो दम, तेरे सह लेंगे हम हर सितम, शॉपिंग पर चले तुम्हें ब्यूटीफुल कहे, ताकि हंसते हुए निकले दम, तेरे जुल्मों से हो सामना, तब साइलेंट रहूं ये कामना, हम सफाई करे तेरा जीना भरे, सर झुकाए खड़े देखना, दिया तूने जो हमको सितम, तू भी झेलेगी अब मेरे गम, तेरे मायके चले सासू माँ से मिले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए बीवी तेरे हस्बैंड हम। बहुत खूब, बहुत खूब। आई एम श्योर सारी बीवियों को आपने अपने गाने से खुश कर दिया होगा। थैंक यू, थैंक यू। वैसे मुझे भी गाने का बड़ा शौक है। तो आप गाते क्यों नहीं? गाया था ना मैं सिंगिंग कंपटीशन में, मुझे दो मेडल भी मिले। दो एक बड़ा मेडल और एक छोटा मेडल। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए था और बड़ा गाना बंद करने के लिए। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस संसार में। होते हैं। अब जब शादी की चर्चा चल ही रही है तो मैं भी 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी शादी के सफर इरशाद इरशाद। तो शादी मतलब अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर। शादी मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं से लेकर बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे तक का सफर। शादी मतलब आप रहने दीजिए ना से लेकर
तुम तो रहने ही दो बस तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जान से लेकर कहाँ मर गए हो तक का सफर। शादी मतलब मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से लेकर नसीब फूटे थे मेरे जो तुम मिले। सो बेसिकली शादी होती है बिजली के तारों के कनेक्शन जैसी। अगर अच्छे से जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी, वरना झटके बहुत लगते हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सोच समझकर देख परख कर की जिसने शादी उसने जीवन बिगाड़ लिया। सोच समझकर देख परख कर की जिसने शादी उसने जीवन बिगाड़ लिया। और चतुराई से प्रेम विवाह किया जिसने उसने भी क्या उखाड़ लिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह रुपेश वाह। ऐसी कविताएं सुनाने वालों तुम्हें क्या इनाम दूं। हाथों में फूलों का गुलदस्ता या ये दुनिया तमाम दूं। दरअसल माँ जिसे सुधार ना सकी तुम वो ग्रोन अप बच्चे, मैं तो कहूंगी तुम लोगों से तो पेट्स ही अच्छे। तुम्हारे ऐसे जोक सहकर भी हम औरतें खामखा बदनाम हैं। एक्चुअली करना चाहिए तुम सब ने, हम औरतों को सलाम है। जी मोहतरमा, सलाम है आप सबको। देखिए, हंसी मजाक सब अपनी जगह है, पर आप औरतों के बिना हम कुछ नहीं, हमारा ये जीवन कुछ नहीं। खरे मायनों में आप सभी हो इस खूबसूरत सृष्टि की रचयिता। एक बार फिर सलाम है आप सबको, सलाम है आप सबको। तो जिस प्रकार सृष्टि की रचयिता होती है एक स्त्री, उसी प्रकार इस प्रोग्राम की रचयिता भी एक स्त्री हैं। So she has created, conceptualized, written and directed this play. May I please call on stage the most beautiful and multi-talented Yamini Kundetkar. Come on, Yamini. Yes, yes. I hope the audience has enjoyed. Good evening, ladies and gentlemen. Hope you're having a good time. We are sorry that we interrupted all the dance sequences with something different, which was a Hasya Mushaira. If you enjoyed it, I would like to hear a big round of applause, please. Thank you so much. My team members have taken a lot of efforts. They've been working, yet they took out time to practice here at the 11th hour. So thanks a lot for all your love. यामिनी, एक मिनट देखिए, यामिनी जी का इंटेलिजेंस आप सबको पता ही है। सो इस पूरी रिहर्सल के दौरान उन्होंने बहुत एंटरटेन किया हम लोगों को। तो आपके सामने भी कुछ पेश करें ऐसी दरखास्त है यामिनी जी से, प्लीज प्लीज। Well, this we planned at the 11th hour. This is a special tribute to all the celebrities of Eden Woods. When I say celebrities, these are the special people whom you all can relate with, you all can connect with. जब उनकी बात होगी तो आप उनको पहचान सकोगे कि मैं किसका रेफरेंस दे रही हूँ। तो उन लोगों का थोड़ा सा मैं मिमिक्री करना चाहूँगी। And before that, I am really grateful and thankful to all those people because आज सवेरे मैंने उनका permission लिया है and all of them have had blind faith in me and they said please go ahead and do whatever you feel like. So thank you so much for trusting me with this. यामिनी जी, एक छोटा सा हमारे पैर दुख रहे हैं, आप प्लीज बैठ जाइए। Thank you, नीरज। So मैं मिमिक्री करना चाहूँगी। This is on शोले का घिसा पिटा डायलॉग जिसमें धर्मेंद्र बसंती को बोलते हैं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। So यहाँ बसंती is यामिनी and धर्मेंद्र के रोल में है the super celebrities of Eden Woods. So I'll begin with Mrs. Mercy Alex. She speaks straight from her heart. She has nothing inside, but she cannot stand injustice. So Mrs. Mercy Alex is Dharmendra and me, Yamini, as Basanti. Good morning, Yamini.
Are you going to dance in front of the dogs today? Are you the federation? Are you the cultural committee? Are you the library committee? Are you any committee? How can you decide on your own to dance in front of the dogs? It is not possible. And you stay in Cyprus, the dogs are around the Cyprus, Poplar, Willow, Hazel, all the area. So the dogs will come in my area also. Did you ask me? And you know, Yamini, I have nothing against you. You know that. But I cannot tolerate injustice of any sort. Did you ask me? I love to dance. Did you ask me? Now, if you are going to dance, I will not allow you to dance alone. Then you have to take me also along with you in the dance. Next, we have the very docile, soft-spoken, sweet singer from Hazel, Bipasa Roy. यामिनी, जयदीप बोला तुम डांस करने वाला है. हमारे बंगाली में बोलता है जेमन कुकुर तेमन मुगुर. कुकुर मतलब कूता, मुगुर मतलब बदला. कूता जैसा वैसा बदला लेने का ना यामिनी. कूता बार्क करता है, तुम नहीं बार्क कर सकता ना. तो डोंट डांस यामिनी. हाँ यामिनी, बुरा मत मानना है यामिनी. नहीं, अच्छा चीज है ना, इसके लिए बोला मैं. हाँ, और तुम्हारा पर्सनालिटी हमारा वेस्ट बंगाल का ममता दीदी जैसा भी नहीं है ना. डोंट डू इट. Next is the most infectious, energetic, youthful, evergreen Mrs. Usha Iyer from Willow. Give it up for her once, please. Today, whatever greenery you're seeing here is thanks to her leadership and the garden committee, of course. So here. Yamini, you're dancing in front of the dogs, or what? Oh, come on, let's all dance. Come on, I will also come. My knees are paining, but then let us dance. You tell me. Tomorrow I have to go for something which is Ravi's work. Tomorrow, day after tomorrow, my mother-in-law is coming. And after that, my sister-in-law is visiting me. And then I have to go for Kiran's work. And then I have to go for Roshni's work. But you don't worry. Chalo, nachega. We'll dance. You want some coffee? When you get tired, I can get you some coffee. And you know what? I can get you some help if you want from Rotaract. I will talk to Ravi. He knows many dancers in Rotaract, you know. Ayyo, Pavam, one of the dancers, yesterday only he met with an accident and fractured his leg. I went to his house with a bouquet and I gave him and I told him, somebody wants to dance, will you help? And ayyo, Pavam, his wife was a teacher, yaar. What happened to her? I am feeling so sad about it. Anyways, you want to dance? I will also come with you. You younger generation have to take it forward. You tell me you want to do Bhangra or you want to do Bharatnatyam. But you tell me in advance, if you want to do Bharatnatyam, I'll have to reduce my weight. I'll stitch new dresses. But I will join you. I will join you. You tell me, come on, we'll do it. Beautiful. Thank you. Next up is, as Annie has already introduced her, as the most helpful personality of the society. कोई कहीं पे भी अटक गया हो तो किसे याद करेंगे? रजनी पित्रे. So रजनी जी. Hey यामिनी, काय गो कुत्र्यांसमोर नाचते तू? अगं नको. अगं कुत्र्यांसमोर का नाचते ग? अगं नको ग, देव आहे तो सगळं बघून घे. तू नवस बोल ना. नाचते काय कुत्र्यांसमोर? नवस बोल तू. अगं मारू दे. कोणाला काय करायचं करू दे. नको रे, नको नको ग. ऐक, जर तू ठरवलंस की नाचणार आहेस, मग मला बोलवून घे. हा, मग मी पण येईन. आपण दोघी ना कुत्र्यांसमोर असं उभं राहून एक ठुमका मारू आणि सेल्फी घेऊन घेऊ. म्हणजे मी माझ्या व्हॉट्सअपच्या स्टेटसवर घालेन, माझ्या फेसबुकवर टाकेन, सगळ्यातून टाकेन. म्हणजे काय होईल माहिती का? अगं आपल्याला पुरावा राहील रे. पण TMC आले, पोलीस आले, कोणी पण आलं ना तर सांगता येईल, बघा आम्ही नाचून बघितलं तरी कुत्रे काही नाही गेले इकडचे. So that's it. Last but not the least, the pillar of the society, without whom none of the committees, none of these functions, nothing could have existed.
because he supports them, he cooperates with them, and he gives them whatever they want. None other than, I don't know whether I should address him as Dronacharya, Bhishma Pitama, whatever of our society, the big B ki tarah big R of our society, Raghunatha ji. Sir, once again, apologies. Good morning, Yamini. This is Raghunatha from the Federation. I hear you're going to dance in front of the dogs. I'll tell you something. I have to listen to everybody. I am from the Federation. If I today allow you to dance in front of the dogs, somebody else will say they want to write a poetry in front of the dogs. Someone else will say I want to sing a shloka in front of the dogs. I cannot permit everybody to dance in front of the dogs. As a Federation person, I have to take care of everything in the society that is happening. I have to be positive for those who like the dogs, those who do not like the dogs, and those who are for the dogs and not for the dogs. And you cannot dance. You cannot dance. And we'll put up, we'll make a subcommittee where somebody will be doing the dance करके हम लोग dance dancing committee करके बना देगा. फिर क्या होएगा? जैसा BBC है ना, वैसा DDC. How is that? Good है, The nomenclature can take place later on, but नहीं, हम permit अभी नहीं कर सकता तुमको. I have to talk to everybody. At the most, in the beginning, what we can do is we can put up a banner where we'll say, dance. We are going to dance in front of the dogs. We'll put the banner. Now the dogs read it, the owners read it, the illiterate dogs read it. That is their problem. I can't allow you to know. That is not possible. I can't allow you to dance. My apologies once again. Thank you very much. Thanks for... One more character, Yamini ji, one more. I have one very sweet lady here. I don't know how many of you have interacted with her. Her name is Anita Bhati. How many of you know her? Yeah. So she's a very sweet lady and she loves to talk. So Anita Bhati ji. यामिनी जी बड़ा अच्छा लगता है सवेरे सवेरे आपकी स्माइल देख के दिल खुश हो जाता है बस प्रभु का नाम लो खुश रहो और क्या चाहिए जिंदगी में मेरी प्रिंसेस के लिए मैं हूँ मेरे सुहास के लिए मैं हूँ मेरे भाटी जी के लिए मैं हूँ आपको पता है भाटी जी आज डांस करने वाले हैं मैंने सुना आप डांस करने वाली हो कुत्तों के सामने कोई बात नहीं नाचो नाचो उसमें क्या है कुत्ते भी भौंकने की जगह प्रभु 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 का नाम ले लेंगे पता चला ईडन उसके कुत्ते भौंकते नहीं है प्रभु का नाम लेते हैं उसमें क्या वैसे भाटी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं भाटी जी की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ बस भाटी जी की वजह से मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि सब औरतों को भाटी जी पति के रूप में मिले यानी मेरा मतलब है भाटी जी जैसे पति मिले तो मैं तो बस प्रभु का नाम लीजिए देखिए ऐसा ही हमने जी मैं तो बहुत खुश मिजाज हूँ और सबको कहूंगी खुश रहो सब लोग दुनिया में आपको अगर अच्छा इंसान ना मिले देखिए हमने जी सिंपल है दुनिया में अगर आपको अच्छा इंसान ना मिले तो खुद बन जाओ बस प्रभु का नाम लो खाओ पियो ऐश करो भाटी जी को भी मैं यही बोलती हूँ भाटी जी बहुत प्यार करते हैं मुझसे मेरे सास ससुर भी बहुत प्यार करते हैं बस मुझे खुश रहना पसंद है आप लोग सब हंसते रहिए खुश रहिए बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच थैंक्स अ लॉट Thank you so much, Yamini. That was brilliant. Thank you. And once again, बुरा न मानो EDWU है. Thank you for all the love. Thank you. That was indeed a very, very welcome surprise that Yamini actually put up on stage. बुरा न मानो EDWU तो जरूर है भाई. EDWU तो जरूर है and it's only getting better with surprises, performances, each one scintillating even better than the other. Thank you so much everybody for your patience. As we clear this stage, of course, to ready it for the next performance, I'd like to invite on stage a member from my team to introduce the next performance. Can I have Swati on stage? Thank you, Annie. I hope you all are enjoying the performances this evening. Are you? I can't hear you. Lovely. Coming up next is Nrityangan, where the girls will showcase 3 rasas, Shringara, Karuna and Veer Rasa. This performance is choreographed by Mr. Sachin Kharat, who has been teaching for around 40 years.
He comes with rich experience of various Indian and Western styles of dance forms. Not to forget, he has set up Bhondla this Navratri. Give a huge round of applause and let's welcome Pallavi Chavan and Gauri Kasture from Willow, Snehal Shenoy, Neha Mandpe and Tejaswini Bhise from Oak, Vinaya Kale from Poplar, Arya Khilare from Maple and Madhura Kalgi from Hikori. Thank you so much, Swati. Let's put our hands together for Nrityangan. Dressed in white and gold, colors that evoke a sense of charm and grace. Nrityangan. Four, three, two, one. Three, two, one. हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। से मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं, कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं, क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों, कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं। बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। Let's hear it for Nrityangan. I think with the charm and grace you brought, not only in your costumes, but also in your performance. Thank you so much. That was lovely. Welcoming Neeta ji on stage. Neeta Chaudhary ji will be introducing the next performance. Neeta ji. जीवन भावनाओं का एक सुंदर मार्ग है और नवरस जीवन की यात्रा का विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम सुंदर यात्रा का दृश्य हमारी ईडनवुड की खूबसूरत लेडीज आपके सामने अद्भुत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, विभत्स रस पर खुद कोरियोग्राफ किए गए डांस का स्वागत करते हैं। प्रेजेंटिंग रेवेशिंग रसवंती ऑन स्टेज देयर धमाकेदार परफॉर्मेंस, नूतन धोत्रे, सविता आसेकर, अमिता भीष्मा, स्वाति जाधव, दीपाली देवभात, भावना शेट्टी, सागरिका सोनार, सुशीला प्रजापति, स्वप्नाली पांचगणे, किंजल जोशी, सोनू कात्रक फ्रॉम लॉरेल, कल्पना जोशी फ्रॉम मैपल एंड समृद्धि देवभाट फ्रॉम बर्च। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। हुजूर तुमको सितारों में ले
बढ़िया तू भी बढ़िया, पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, रख तू अपनी फुल झड़िया बढ़िया बढ़िया। चट मंगनी कर पट मंगनी, मुझे पत्नी बना ले झटपट अपनी। सुन पगली मैं हूँ छोरा जंगली, अरे काहे को बनाना चाहे मेरी चटनी। ओहो ओहो मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, फूटेंगी फिर फुल झड़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं प्रिये, दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्या, सबने हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। Amongst the senior most women of our complex, Sonu ji, thank you so much. That was so beautiful. Lovely. Thank you so much, girls. Thank you so much. Ravishing Raswantis indeed. Can we hear it once again for everyone on stage? That was Ravishing Raswantis. I'd like to call upon Revati Kamath from my team, who will be now introducing the next performance, the Dazzling Divas. Thank you, Annie. Hi. Hello, everybody. Make some noise. खाना भी खाया है सबने अभी. Woo! Okay, great. So my name is Revati. Everybody knows me as Soham's mama. So let me introduce you to the next group. So now that you have seen the 9 rasas, our next performance is about Shringar Ras and Karuna Ras. In Indian marriages, firstly, bride and groom see each other. The families meet. There is muh dikhai and lots of functions before the wedding day, which helps the couple and the families to know more. That's Shringar Ras, which means love and beauty. Then we come to Karuna Ras, which means sadness but with satisfaction, where families come together and do bidai of the beloved girl. There is sadness as she's leaving the maternal home, but even satisfied for her bright future. Let's put our hands together for the performance performed by Mayura Bhope, Akshata Shetty, Payal Agarwal, Shobna Sundar, Poonam Wagmare, Dipshika Goyal, supported by Gojri Ranade, Harit Pandya, Yash Singh, choreographed by Shruti Bhalikar Singh. Shruti is the founder of Momentum Dance and Fitness Studio. So guys, please make some noise. All the best, guys.
तुलसी का पानी छलका छलका रे ओ आँख न मानी छलका छलका रे तुलसी का पानी छलका छलका रे ओ आँख न मानी मैया बोले जाना नहीं भैया अभी माना नहीं बाबुल बोले बस एक दिन कल का झलका गुड्डा बोले जाना नहीं गुड्डी बोले जाना नहीं सखी बोले बस एक दिन कल का झलका छलका छलका रे तुलसी का पानी छलका छलका रे ओ आँख न मानी वजह से खान मुझको जो मेरे साथ जान जानो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो मुड़ के ना देखो दिल भरो फसले जो काटे जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा Let's give it up for the team. They were beautiful on stage. Can we hear a very big round of applause for them? Once again, Revati on stage to introduce the next team. I think the performances so far have been beautiful, amazing, I think gorgeous. Annie, yes, absolutely. Everyone is outdoing everybody else, but of course this is no competition. This is where everybody is coming together to put in their best time, talent, and put up a performance for everybody to remember. So let's hear it for everyone who's performed so far. More voice, guys. Can we give it up for everyone? Thank you. Over to Annie, you, I think Revati. along with all the child work and everything, they have managed beautiful dances. I Absolutely. think these ladies are amazing. Okay, so now, guys, brace yourself for a power-packed performance on Shringar Ras and Raudra Ras. I want to talk about acid attack here. A devastating violence against women. Acid attacks happen across the world and it affects women disproportionately. Although it is also unacceptable when acid violence occurs against men. Acid violence is a form of violence that has an impact most on women. This crime goes unreported and unpunished. I would like to say,
सुंदरता एक वरदान या अभिशाप, जलाया है मेरा चेहरा तुमने एक नाकाम बंदे, एक अब देख हौसले की चिराग से रोशन करूंगी सारा जहां मैं कैसे. Presenting Pretty Woman, led by Bhairavi, choreographed by Shruti Bhalekar Singh, performance by Harit Pandya, Bhairavi Desai, Meet Rohra, Forum Pandya, Shilpa Sapkale, Jai Vedak, Vinaya Panjare, Nazifa Khan, Jason Sijo and Shashi Verma. Come on guys, make some noise. Woo! All the best. सांस की हर लौ से तेरी रोशन मैं आंगन करूं, सांस की हर लौ से तेरी रोशन मैं आंगन करूं, तारा बन धरती पे चमके, तिनक तिनक श्रृंगार करूं, वीर सिंदूरी माथे रचूं, तिनक श्रृंगार करूं, वीर सिंदूरी माथे रचूं. कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया. आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी. देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं क्या बात है, क्या बात है. Using art to, of course, make a very, very strong and courageous point. Well done, ladies. Well done. They call themselves pretty women. I think they're more than pretty, and made a very, very important point.
Thank you so much for that. That was lovely. I'd like to call upon Sheila ji, one of the senior members of my team, who's taking to the mic to introduce the next performance. Sheila ji. नवरस यातल्या रस शब्दाचा अर्थ आहे सौंदर्य आणि या सौंदर्याचा आस्वाद म्हणजे रसास्वाद. हे नवरस आपल्या आयुष्यात नसतेच तर आपलं आयुष्य किती निरस कंटाळवाणं झालं असतं ना. ज्ञानेश्वरांसारखे महाकवी सुद्धा म्हणतात, नवरसी भरवी सागरू, नवरसांचा सागर माझ्या साहित्यात भरून जाऊ दे. या नवरसातील शृंगार, करुण, रौद्र आणि शांत रसाचं स्वरूप आपल्या समोर करणार आहेत सादर डॅशिंग नृत्यांगना. लखलख चंदेरीपासून आत्ताच्या मोहे रंग दे लाल आणि अहिर भैरव रागात बांधलेली अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, ही पारंपरिक बंदिश पण नवीन साज लिहून आलेली असा हा जुन्या नव्याचा सुरेख संगम म्हणजे आजचा नृत्याविष्कार. ह्यामधल्या गाण्यांचं जे सिलेक्शन आहे ना, त्याच्यासाठी माझ्याकडनं पहिली टाळी आणि त्यानंतर तुमच्याकडून होणारा टाळ्यांचा कडकडाट हा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असेल. शेवटी काय, तुम्ही रसिक आहात म्हणून हे कलाकार आहेत. आपण ज्यांना भेटायला अतिशय उत्सुक आहोत त्या आहेत वंदना खैरनार, रजनी पितळे, मर्सी ॲलेक्स, वनिता खिलारे, दिशा जाधव, निधी शुक्ला, मिताली काळे, बिंदू भट, ॲडव्होकेट कामिनी जाधव, स्वप्नाली पुराणिक. ग्रुप लीडर आहे मिताली काळे आणि कोरिओग्राफर आहेत सचिन खरात. Three, two, one. कलांचा हे तंत्र आमच्या देशी आले नव्हते, पण करून ठाम निर्धार योगी वृत्तीने फाळके ऋषींनी खडतर व्रत आचरले. मराठी पाऊल पडते पुढे, मराठी पाऊल पडते पुढे, मराठी पाऊल पडते पुढे. वेला सजन आयुरी मोरा अति मन सुख आयुरी.
हॅलो. How beautiful was this? Lovely. Thank you so much, wonderful ladies. Dashing Dasha Nrityangana. Thank you so much for that gorgeous performance. Calling upon Sheila ji once again to introduce the next performance. जुलमी संग आंख लडी, मेरे नैना सावन भादो, डोळे हे जुलमी गडे, डोळ्यात वाच माझ्या तू गीत भावनांचे, इथपासून ये लडकी आंख मारे इथपर्यंत असंख्य गाणी नैना आंखे डोळे यावर झाली. पण आजची गाणी जरा हटके आहेत. गाणी जरी हटकी असली ना तरी भावना मात्र तीच आहे. या हृदयीचं त्या हृदयी पोचवण्यासाठी डोळ्यांची परिभाषा लवकर समजते. कारण डोळे बोलतात, डोळे हसतात, डोळे बरंच काही सांगून जातात. म्हणूनच मला असं वाटतं की क्लासिकल डान्समध्ये नेत्राभिनय हा फार महत्त्वाचा आहे. आपण स्वागत करूया श्रुती देसाई आणि सामिया खान यांचं. ग्रुप लीडर आहे श्रुती देसाई आणि कोरिओग्राफर आहेत श्रुती भालेकर सिंग. अर्थातच शृंगार रसाचा आविष्कार. चैन रैन नैन अपने साथ ले गया. नैनों वाले ने, नैनों वाले ने, नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया. चाल है मखमली हाल है, नीची पलकों से बदले पलकों से बदले रसीने माथे तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं. You did a wonderful job, Flower Power. From Sheila Apte ji, and now moving over to Komal Vategaonkar. Thank you so much, Komal. The stage is all yours. How's the Josh? I didn't hear that. How's the Josh? All right. After watching beautiful performances one after the other, I'm introducing you to Takita Girls, the last performance of this evening. They're depicting Hasya Ras. Hasya Ras connects you to your humor, laughter, happiness, and contentment. It has a range of emotions and is the extension of what you feel within. So these girls are going to make you feel happy. Okay? It gives me immense pleasure
to introduce you to Ira Krishnan from Juniper, Kanchi Zog from Birch, Ananya Naidu from Poplar, and Tanisha Vategaonkar from Laurel. The witty choice by their choreographer, Mrs. Gauri Desai, will ensure a completely fun-filled performance. And I'm sure you're going to tap your feet and enjoy this dance performance. Let's give them a big round of applause. Here's to Takita girls. Thank you. All the best. The last performance of the evening. Let's give it up once again for the Takita girls. पड़ी नहीं आज नीचे मोरी पैया मोहे किसी रोकी डोकी डगरी उड़ चली साथ मेरी मोरी बतिया मोहे कहीं बांध तोरी गदरी भाव सखी संग संग मेरे मन पतंग भागे भाव सखी संग संग मेरे अंग अंग नाचे गाए ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan distante y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम ले लो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी निभाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, कब तुम आओ खो जाए, खुले हम होगा हम है क्या सेन्योरिटा. सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं लोग क्या. जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो. हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो. इन सब के मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है इन आँखों में, दिल में है क्या अरमान. Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज़ बदल के.
with a bang. That was really nice. Thank you so much. Well, we have come to the end of our annual performance this year, EDWU 2022. पर इतनी जल्दी भागेगा नहीं. हमारे पास अब 5 मिनट बाकी है 10 बजने में. And we'll be giving a quick word of thanks to everyone who have made this happen. Logistically made this happen. So a quick thank you to the Federation of Eden Woods once again. Vandana Mandap Decorators, Ajay Boyer, thank you so much. Light and sound arrangement, Rohan Savant. In-house tech support, Mr. Amit. All the wonderful food displays. I can read Maharaj, Truckista, Frosty something, and there are this side, I think, the Kapoor's Kitchen. I don't know if I'm missing out the others. All the choreographers for various dances. Thank you so much. Thank you so much for every performer this evening, for everyone behind the scenes, whose names I may not have taken. Aaj maine shayad kisi ke naam miss kar diye honge. But thank you to everyone also. Everyone who was present this evening. Thank you, aap sab aaye. Bada maza aaya. Thank you so much. Bahut shukriya. Can we just hear it for all of us who gathered here to make this a huge success? Thank you. Thank you so much. And can I please request everybody not to leave? One last little thing that I want everybody to be here together for, and that's the national anthem. Can everybody please stand for the national anthem? And with that, we will close the evening. Thank you. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे Jai! Thank you so much. And as you walk out of the grounds, there is yet another little surprise waiting for all of us. You can look up into the sky. I've been told you, all you have to do is, ऊपर देखिए. सबके लिए एक छोटा surprise है. शुरू हो रहा है कि नहीं? Shetty Anna? I hope you got the cue. Yes.